नमस्कार। मंच पर आसीन गणमान्य अतिथिगण, सभागार में उपस्थित देवी और सज्जनों, PLI योजना के अंतर्गत ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स फॉर बल्क ड्रग एंड मेडिकल डिवाइसेस के उद्घाटन समारोह में हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। PLI या प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है। आत्मनिर्भर, स्वावलंबी एवं सशक्त भारत को उस ओर ले जाने का एक और मजबूत कदम है। PLI स्कीम उसी सपने को चरितार्थ करने वाली एक अति महत्वपूर्ण योजना है। PLI स्कीम के अंतर्गत कुछ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन माननीय मंत्रिवर्ग के कर कमलों द्वारा आज यहाँ होगा, किंतु सर्वप्रथम हम मंच पर आसीन सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत फूलों, ग्रीन सर्टिफिकेट और एक पौधे की भेंट के साथ करेंगे। मैं सर्वप्रथम अनुरोध करूंगी मंच पर आसीन सचिव डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स डॉक्टर अरुणीश चावला जी से कि वे कृपया माननीय मंत्रिवर्ग को एक पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। Ladies and gentlemen, under its green initiative, FICCI has planted 10 trees in the Honorable Minister's honor at different locations. These are being done at different locations in the country. This green certificate acknowledges the planting of 10 trees in the honor of the Honorable Minister at village Fatehabad in Haryana. Our Secretary General, Shri S.K. Pathak, doing us the honors of presenting the green certificate and this plant. हम हार्दिक अभिनंदन और एवं स्वागत करते हैं श्री राजेश कुमार सिंह का, सचिव DPIIT। जी, मैं माननीय डॉक्टर अरुणीश चावला जी से अनुरोध करूंगी कि वे माननीय अतिथि का स्वागत पुष्पगुच्छ की भेंट के साथ करें। और अब मैं सेक्रेटरी जनरल FICCI श्री S.K. पाठक जी से अनुरोध करूंगी कि वे माननीय अतिथि को ग्रीन सर्टिफिकेट और इस पौधे की भेंट के साथ उनका स्वागत करें। आज इस अवसर पर हमारे बीच मंच पर आसीन है श्री कमलेश कुमार पंत, चेयरमैन NPPA। मैं एक बार फिर डॉक्टर चावला से अनुरोध करूंगी कि वे माननीय अतिथि का स्वागत फूलों की भेंट के साथ करें। हमारे सेक्रेटरी जनरल से अनुरोध है कि वे कृपया माननीय अतिथि का स्वागत ग्रीन सर्टिफिकेट और पौधे की भेंट के साथ करें। आज हमारे बीच मंच पर आसीन है डॉक्टर अरुणीश चावला, सचिव डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। मैं श्री S.K. पाठक, सेक्रेटरी जनरल FICCI से अनुरोध करूंगी कि वे माननीय अतिथि का स्वागत ग्रीन सर्टिफिकेट और इस पौधे की भेंट के साथ करें। देवी और सज्जनों, PLI स्कीम, जैसा कि हम आप सभी से साझा कर चुके हैं, भारत सरकार का स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता की ओर एक सशक्त कदम है। इस स्कीम में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन आज माननीय मंत्रिवर्ग अपने कर कमलों द्वारा करेंगे और इस महत्वपूर्ण उद्देश्य का, इस ध्येय का पूरा करने का जो बीड़ा उठाया है, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। किंतु सर्वप्रथम may I invite Dr. Arunish Chawla, Secretary, Department of Pharmaceuticals, to kindly give the welcome address and do the context setting. Please welcome with an applause. It's indeed my privilege and honor to welcome Dr. Mansukh Mandaviya, Honorable Minister for Health and Family Welfare, Chemical and Fertilizer, for sparing time from his extremely busy schedule to grace this momentous occasion.
Ladies and gentlemen, today is a big day. After years of hard work, 40 Greenfield plants, manufacturing bulk drugs and medical devices, which hitherto were almost entirely imported in the country, will be launched by the Honorable Minister today. I'm grateful, extremely grateful to Secretary, Department of Industrial Policy for his inspiration and unrelenting support to this scheme. Without him, the PLI scheme that you see getting launched today would not have come to fruition. We are grateful to Secretary General FICCI, Dr. Sailesh Pathak, for playing host and providing full support of the Federation of Indian Chambers and Commerce and Industry to this occasion. I welcome our friends from the media who've turned up in large numbers to cover this historic occasion. And last but not the least, I welcome the champions of our industry, the golden champions who have worked hard and have set up these plants in India and made PLI scheme such a roaring success. And their plants will be launched today. They are with us inside this room and they are connected with us from 40 different locations from the length and breadth of the country, and many of them have joined us online. I would request all of you to give these industrial champions a big hand. Ladies and gentlemen, we'll start the proceedings with a small presentation, and that will be followed by a film which will give you a pictographic view of each of these plants. And after that, the Honorable Minister will inaugurate these projects. As you all know, India is the pharmacy of the world, and we have not earned this sobriquet for nothing. It's taken us years of hard work and dedication to get here. India today boasts of the largest number of WHO GMP certified plants anywhere on planet Earth, and also the largest number of US FDA certified plants outside the United States. Friends, the drugs and pharmaceutical industry in India was 2.4 lakh crores in the year 2013-14. The annual survey of industries for the year 21-22 recently came out, and to our great delight, we discovered that this industry has already reached a size of rupees 6 lakh crores. And for those of you who want to understand the meaning behind these numbers, that means a compounded annual growth rate of 12% over the last 10 years. Ladies and gentlemen, Honorable Prime Minister launched the Atmanirbhar Bharat initiative to boost manufacturing and make India self-reliant in critical sectors. The PLI scheme is an integral part of this strategy to incentivize manufacturing and make India a key player in the global supply chains. The production-linked incentive schemes are being implemented by the Government of India with a total financial outlay of rupees 2 lakh crores. Friends, this is a big initiative, and three major schemes, the PLI schemes, are implemented by the Department of Pharmaceuticals, and these are the PLI scheme for pharmaceuticals, the PLI scheme for bulk drugs, the PLI scheme for medical devices, and this makes
the pharma and the medtech sector one of the leading sectors for the PLI schemes in the country. Friends, just to give you a brief overview, we'll share a copy of the presentation, so don't worry, please enjoy the moment. The PLI scheme for pharmaceuticals has an outlay of 15,000 crores and it provides incremental production and sales incentive for 6 years. As many as 1,800 pharmaceutical products and formulations will be manufactured in India under this scheme. Friends, this is an infographic which neatly summarizes this scheme. The scheme benefits all applicant groups, both Indian and foreign companies who believe in the Indian dream and who endeavor to make in India. The eligible products under the scheme include biopharmaceuticals, complex generics, cell-based therapies, orphan or rare disease drugs, complex excipients, and phytopharmaceuticals. It also includes repurposed drugs, autoimmune, anti-cancer, anti-diabetic, psychotropics, and cardiovascular drugs. Last but not the least, the in vitro devices. India is the generic pharmacies, the generic leader across the world, but that we should not rest on our laurels. The purpose of PLI scheme is to enhance and increase value addition in the country and move and diversify our value chains to high-value products which are futuristic and will be the basis of medical therapies in the years ahead. Friends, I'm very happy to announce that under the PLI scheme for pharmaceuticals, till December 2023 alone, more than 1,20,000 crores worth of pharmaceutical products have been produced in the country, and of these, 73,000 crores, which is nearly 10 billion, have already been exported. Friends, the next scheme, the PLI scheme for bulk drugs, is a very difficult scheme. This is an area in which we were almost entirely import dependent a few years ago. This scheme envisages setting up Greenfield plants, and Greenfield means right bottom up from the scratch. These plants are being set up in the country for manufacture bulk drugs, which hitherto were all imported in India. And this has enhanced our drug security. And I'm very happy to announce that last year, for the first time, we exported as many bulk drugs as we imported in the country. And friends, we exported more than half of our pharmaceutical output, making Indian pharmaceutical industry an export-oriented industry driving the Indian economy. Friends, the plants that we are going to inaugurate today, 22 bulk drugs will now be manufactured in India. These are the bulk drugs on which we were 100% import dependent, and you see them in the table on the left side. In addition to this, 11 bulk drugs are being manufactured. The plants are being set up, and they will be commissioned in the year ahead. And the Honorable Minister will talk about the importance of penicillin G when he delivers his address. Last but not the least, medical devices. Again, a very ambitious scheme, because when the scheme came in,
we were nearly 90% dependent on medical devices. We imported almost every big medical device that you see in the hospitals from abroad. This initiative is changing the landscape. Under the scheme, we have approved 26 projects covering 138 medical devices, and of these, half the projects will be launched and dedicated to the nation today itself. Friends, under these schemes, 40 medical devices which are familiar to all of you and cover CT scans, MRI machines, X-rays, cath labs, ventilators, anesthesia stations, body implants, and the very important cancer therapy machines like linear accelerators and the rotational cobalt machine. Next. To end with a glimpse into the future, friends, the last year for which we have the export-import data for pharmaceuticals, we exported pharmaceuticals worth 25 billion in 22-23, while our imports were only 8 billion, which means in the drugs and pharmaceutical sector, we exported 3 times of what we imported. Friends, please see this infographic in front of you. Medical device is the new champion. It is the rising industry, and you see a changing landscape in front of you. The red bars on the left are the imports of medical devices in the last 4 years. The purple in the middle are their imports. And as you can see, the last bar, which is the dark blue bar, which is net imports, for the first time in our history, this came down in absolute terms last year. And friends, this is not by providence. This is because of your hard work, and this is because of the PLI scheme. This is because we started manufacturing these devices, which were hitherto never manufactured in our country. And if you see the import coverage ratio, it steeply went up to 45%. And if we continue to do well, continue to go up the ladder, by 2030, we would be net zero in imports in medical devices. Friends, PLI has laid the foundation, but we should not rest on our laurels. We provide both schematic and policy support going beyond the schemes, and we will not rest on our haunches either. The PLI scheme will support the medical device industry up to 27, but going forward beyond that, the government launched the medical device policy last year, and this will provide sustained support to the industry going far beyond the PLI years, and this policy support will be based on value chain analysis, phased manufacturing program, preferential market access, quality upgrades, testing facilities, skill development, and streamlining of regulatory approvals. Friends, thank you very much for your patience, and I will now request that films may be played giving a glimpse of all the plants that will be inaugurated today, and after that we'll request the Honorable Minister to press the button. Thank you. Thank you, Dr. Chawla, for this warm welcome address and the context setting. Ladies and gentlemen, we are going to witness the inauguration of Greenfield projects under PLI scheme for bulk drugs. But before we do that, may I request for a video to be played? आइए इस वीडियो के माध्यम से इन प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा और जानते हैं. The Indian pharmaceutical industry, often referred to as
as the pharmacy of the world, contributes to global public health and promoting universal healthcare access across the globe. India is the world's largest provider of generic medicines by volume, with a 20% share of total global generic supplies. It is the third largest global player in drugs and pharmaceuticals by volume, estimated at a size of $50 billion in 2022-2023, and exports account for 50% of this production. It is anticipated to double to reach a size of around $130 billion by 2030. The Department of Pharmaceuticals is implementing the Production-Linked Incentive or PLI scheme for promotion of domestic manufacturing of critical key starting materials, KSMs, drug intermediates and active pharmaceutical ingredients, APIs, in the country, with a financial outlay of Rs 6,940 crore. The initiative aligns with the government's vision for a resilient healthcare ecosystem, emphasizing sustainability and security in the pharmaceutical sector. Today's event underscores the government's commitment to fostering indigenous production, supporting technical competence and innovation in the industry. Highlights of PLI scheme. The PLI scheme for bulk drugs is an important initiative for realizing the vision of healthy and developed India of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. The Greenfield projects under the Production-Linked Incentive Scheme for bulk drugs are Amoli Organics Private Limited has its Greenfield project situated in Vapi, Gujarat, dedicated to the production of diclofenac sodium. Andhra Organics Limited has its Greenfield project situated in Srikakulam, Andhra Pradesh, dedicated to the production of sulfadiazine and telmisartan respectively. Anasia Lab Private Limited has its Greenfield project situated in Nalgonda, Telangana, dedicated to the production of losartan and olmesartan. Aviran Pharma Chem Private Limited has its Greenfield project situated in Mehsana, Gujarat, dedicated to the production of artesunate. Centrient Pharmaceuticals India Private Limited has its Greenfield project situated in Navanshahar, Punjab, dedicated to the production of atorvastatin. Dasami Lab Private Limited has its Greenfield project situated in Nalgonda, Telangana, dedicated to the production of carbamazepine and oxcarbazepine. Emminar Pharma Private Limited has its Greenfield project situated in Sangareddy, Telangana, dedicated to the production of 1,1-cyclohexane diacetic acid or CDA. Hazelo Lab Private Limited has its Greenfield project situated in Yadadri District, Telangana, dedicated to the production of vitamin B6. Honor Lab Limited has its Greenfield project situated in Sangareddy, Telangana, specializing in the production of levetiracetam and valsartan. Additionally, the company has plants in Visakhapatnam, Andhra Pradesh, for the production of lopinavir and vitamin B6. Hyundai's Lab Private Limited has its Greenfield project in Nalgonda, Telangana, specializing in the production of 1,1-cyclohexane diacetic acid, CDA, and acyclovir. Hetero Drugs Limited has its Greenfield project in Visakhapatnam, Andhra Pradesh, specializing in the production of carbidopa and levodopa. Additionally, company has its plant in Sangareddy, Telangana for production of levofloxacin and oxcarbazepine. Globela Industries Private Limited has its Greenfield project in Bharoch, Gujarat, specializing in the production of norfloxacin and ofloxacin.
Creative Actives Private Limited has its Greenfield project in Vishakhapatnam, Andhra Pradesh, specializing in the production of diclofenac sodium. Sadhana Nitro Chem Limited has its Greenfield project in Raigarh, Maharashtra, specializing in the production of para-aminophenol. Meghmani LLP has its Greenfield project at Dahej, Gujarat, towards the manufacturing of para-aminophenol. Symbiotic Pharma Lab Private Limited has its Greenfield project located at Dhar, MP, towards the manufacturing of prednisolone. We now seek the virtual inauguration of Greenfield projects under the Production Linked Incentive Scheme for Bulk Drugs by Dr. Mansukh Mandaviya, Honorable Minister for Chemicals and Fertilizers and Health and Family Welfare, Government of India, and Shri Bhagwant Khuba, Honorable Minister of State for Chemicals and Fertilizers and New and Renewable Energy, Government of India. देवी और सज्जनों, आज हमारे देश के इतिहास में एक स्वर्णिम पन्ना जुड़ने जा रहा है। मैं माननीय मुख्य अतिथि हमारे माननीय मंत्रीवर डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से अनुरोध करूंगी कि वे अपने कर कमलों द्वारा एक बटन दबाकर इन प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करें, जो कि जैसा हम देख चुके हैं इस फिल्म में देश भर में अलग अलग जगहों पर स्थित है। Ladies and gentlemen, we are witnessing the marvels of technology through one centralized press of a button. We've seen the inauguration of Greenfield projects under PLI scheme for bulk drugs. Ladies and gentlemen, under the PLI scheme today, we shall be witnessing the inauguration of Greenfield projects under PLI scheme for medical devices as well. Let's watch another video introducing these projects. Is considered as one of India's sunrise sectors. India is the world's fastest emerging medical device market, with the sector growing steadily at a CAGR of 15% over the last 3 years. Currently estimated at $11 billion in revenue, it is expected to cross the 30 billion mark by 2050. Export of medical devices from India stood at $3.39 billion at the end of financial year 2022-2023. India manufactures 6,000 unique medical devices, with 10 major segments being imaging devices, cancer care, critical care, body implants, consumables, disposables, surgical instruments, hospital equipment, in vitro diagnostic devices, assistive devices. The PLI scheme for medical devices aims to boost domestic manufacturing and attract investments in the sector to reduce dependency on imports. It symbolizes a strategic move towards enhancing technical capabilities, aligning with the government's vision for a self-reliant healthcare ecosystem. Today's event underscores the government's commitment to fostering indigenous production and support innovation in the medical devices sector. The 4 major target segments for manufacturing under the PLI scheme are cancer care or radiotherapy medical devices, radiology, imaging and nuclear imaging devices, anesthetics, cardiorespiratory and renal care medical devices, implants including implantable electronic devices. Highlights of PLI scheme. The PLI scheme for medical devices is an important initiative for realizing the vision of healthy and developed India of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. The Greenfield projects under the Production Linked Incentive Scheme for Medical Devices are Allied Medical Limited has its Greenfield project at Karoli, Alwar, Rajasthan,
for manufacturing of anesthesia products including unit gas scavengers, kits, masks, vaporizers, defibrillators, infusion pumps, intensive care ventilators, high-flow oxygen devices, etc. Envision Scientific Private Limited has its Greenfield project at Sachin, Surat, Gujarat for manufacturing of stents and PTCA balloon catheter. Involution Healthcare Private Limited has its Greenfield project at Jaipur, Rajasthan and Vizag, Andhra Pradesh for manufacturing of stents. Magic Medical Solutions Private Limited has its Greenfield project at Hyderabad, Telangana for manufacturing of cardiovascular and microcatheter tubing, neurovascular respectively. Microtech New Technologies Private Limited has its Greenfield project at Baddi, Solan, Himachal Pradesh for manufacturing of oxygen concentrators. Nipro India Corporation Private Limited has its Greenfield project at Satara, Maharashtra for manufacturing of dialyzer. Panacea Medical Technologies Private Limited has its Greenfield project at Kolar, Karnataka for manufacturing of linear accelerator, LINAC, and rotational cobalt machine respectively. Philips Global Business Services LLP has its Greenfield project at Taluka, Khed, Pune, Maharashtra for manufacturing of MRI coils. Polymedicure Limited has its Greenfield project at Faridabad, Haryana for manufacturing of dialyzer, dialysis machine, peritoneal dialysis kit, fistula, bloodline and transducer protector. Sahajanand Medical Technologies Private Limited has its Greenfield project at Surat, Gujarat and Sangareddy, Telangana for manufacturing of stents and PTCA balloon catheter. Siemens Healthcare Private Limited has its Greenfield project at Hosur Road, Bengaluru for manufacturing of CT scan and MRI. Trivitron Healthcare Private Limited has its Greenfield projects at Raigad, Maharashtra and Vizag, Andhra Pradesh for manufacturing of X-ray equipment, C-arm, mammography and ultrasonography. Wipro GE Healthcare Private Limited has its Greenfield project at Bengaluru, Karnataka for manufacturing of CT scan, cath lab and ultrasonography. We now seek the virtual inauguration of Greenfield Projects plants under the Production-Linked Incentive Scheme for Medical Devices by Dr. Mansukh Mandaviya, Honorable Minister for Chemicals and Fertilizers and Health and Family Welfare, Government of India, and Shri Bhagwant Khuba, Honorable Minister of State for Chemicals and Fertilizers and New and Renewable Energy, Government of India. देवी और सज्जनों, इसी के साथ मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय मंत्रीवर डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से अनुरोध करूंगी कि वे कृपया बटन दबाकर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स अंडर PLI स्कीम फॉर मेडिकल डिवाइसेस का उद्घाटन करें। इन सभी प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन के लिए मंत्रालय को एवं उन सभी व्यक्तियों को जिन्होंने बहुत बहुत मेहनत की, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और इसी के साथ आज हमारे साथ मंच पर आसीन हैं सचिव DPIIT श्री राजेश कुमार सिंह। मैं माननीय सचिव महोदय से अनुरोध करूंगी कि वे कृपया सभा को संबोधित करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। Honorable Minister for Chemicals and Fertilizers and Health and Family Welfare, Government of India, Dr. Mansukh Mandaviya ji, my esteemed colleague, Dr. Arnish Chawla, Secretary, Department of Pharmaceuticals, Government of India, my other esteemed colleague, Mr. S.K. Pathak, who is also a schoolmate of mine, Secretary General of FICCI, Mr. Kamlesh Pant,
business leaders from the pharma industry, PLI beneficiaries, ladies and gentlemen. I don't have any prepared remarks, so I'm going to speak off the cuff about the PLI scheme in general and about Make in India more generally. This year marks the 10th anniversary of the launch of Make in India. The idea was to really bump up our manufacturing ecosystem to ensure that it starts increasingly provide an increasing share in our gross domestic product, which was at that time and still is almost the same as agriculture, perhaps even a little less. Although in the recent economic review, our manufacturing share in GVA has reached 17.4%. In that initial phase of Make in India, we focused on things like ease of doing business and providing credit, tax reforms, those kind of things. A lot of work has been done in these areas. And thereafter, during the COVID years, the government of Prime Minister Modi ensured that we converted that crisis into an opportunity by doing structural reforms for the economy in terms of providing increasing credit, further impetus to ease of doing business, and other major structural reforms, including a tremendous focus on infrastructure, both physical and digital. And that focus, you would have seen, continues to this day through the current year's budget, where 1,11,000 crores was set aside for public capital formation on physical infrastructure. The PLI scheme, in a way, which was launched about 3 years back, is a case of the government of India walking the talk when it comes to Make in India. The government provided almost $26 billion, 1.97 lakh crores for 14 sectors of the economy across 10 different departments, with the idea being to really to kickstart investment, to generate sales, to generate employment, and to really create national and global champions out of some of our business leaders who were working or who would like to work in those sectors. As a result of that scheme so far, we've reached a stage where we've already got investments of about 1 lakh crores. We've got sales in total across these sectors of 8.7 lakh crores. We've got exports of over 3 lakh crores. And we've got investments coming in of an additional 2 lakh crores. So this scheme, contrary to some narratives which cast doubt about the success of the scheme, is actually doing very, very well. And even in areas where the incentive, for example, the disbursement hasn't started, usually it is because the gestation period in some of those schemes is still not over. Now, in addition, as you would have seen from this very impressive list of projects that were inaugurated by our Honorable Minister today, pharma is one of the areas where we are moving well. We are moving at speed and scale, which is characteristic of the Prime Minister Modi's government. You saw for the first time these tremendous new investments, Greenfield units coming up of drugs, of medical devices that have never been produced in India before, and that were and for many of which we were not only import dependent, but we were also strategically dependent and vulnerable, in the sense that many of these are strategic supply chains. If you depend over much on particular geographies, you are vulnerable to a geopolitical risk, as the saying goes. At a more general level, for the industry, I would also like to say that Government of India knows that this is an industry which focuses on innovation. And if you see DPIIT's, one of its domains is IPR, the intellectual property right regime in the country. At one time, in about 9-10 years back, in 2014, India used to grant about 5,900 patents per year. In the current year, we've already granted about 85,000 patents. We'll hit 1 lakh patents before the end of this financial year. That is as a result of the focus we've put in enhancing the human resources at our patent offices, increasing their staff manyfold to ensure that the startup ecosystem that we've built up, including in areas like pharma, the innovators that we have, they get the benefit of the intellectual property rights that they create by getting quick access to their quick disposal rather of their patent applications.
That is broadly what I wanted to say. Let me add one other point about the PLI scheme, since sometimes there is a criticism that the glass is half full, that the value addition is perhaps inadequate in some areas. So a lot of that criticism, frankly, is uninformed and misinformed. You will find that in most of the sectors of PLI, particularly in, for example, in automobiles, the threshold for value addition itself is 50%, which means that you will not get any incentive until you reach 50%. In others, like food processing, for example, almost 100% value addition is ensured. In white goods, the value addition is minimum 25% and it is supposed to go up to 75% by the end of the scheme. So when people say that this scheme is leading to only assembly, that it is not leading to localization and value addition, let me again say that they are really badly misinformed. And the pharma sector is going to create out of this, out of the many of the projects that you see today, national and global champions. I have no doubt about that. Let me end by congratulating the Department of Pharmaceuticals for organizing this, for getting these things, getting these projects up and running, for showcasing before all of us the speed and scale with which the department and Government of India is working today. Thank you very much. Thank you, sir, for this informative and thought-provoking address. Ladies and gentlemen, we are honored to have in our midst this afternoon Dr. Mansukh Mandaviya, Honorable Minister for Chemicals and Fertilizers, Health and Family Welfare. मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करती हूं कि वे कृपया सभा के सम्मुख उद्घाटन भाषण दें। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। आज एक साथ में 51 PLI प्रोडक्ट का लॉन्चिंग यानी कि लोकार्पण के अवसर पर आज हमारे बीच में उपस्थित DPIT के सेक्रेटरी RK सिंह जी, हमारे फार्मास्यूटिकल विभाग के सेक्रेटरी अरुणेश चावला जी, पाठक जी, हमारे NPPA के चेयरमैन पंत जी, सभी उपस्थित भाई बहनों, आज मुझे खुशी इस बात की है कि देश आत्मनिर्भरता की ओर एक डग आगे बढ़े हैं। मुझे याद आ रहा है कि देश में कोविड आ चुका था, एक और सारी शिपिंग लाइन बंद थी, एयरपोर्ट बंद थे, इंटरनेशनल फ्लाइट बंद थी, बॉर्डर पर टेंशन चल रहा था, डोकालाम इश्यू हुआ था, और दूसरी ओर हमारी 140 करोड़ की जनसंख्या थी और उसको मेडिसिन एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। हमारी 12,000 फार्मास्यूटिकल कंपनीज, एक कंपनी चलाने के लिए जरूरी बल्क ड्रग्स, और ये सभी के बल्क ड्रग्स के लिए API प्लांट कई इंडिया में बनते हैं, कई हमें इंपोर्ट पर डिपेंड रहना पड़ता है। वैसी स्थिति में जब कोविड आया और जब इंपोर्ट लाइन डिस्टर्ब हुई, उस वक्त हमने अध्ययन करा था कि कौन से ऐसे बल्क ड्रग्स है जो 90% हमारी इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी है, और ये बल्क ड्रग इंडिया में नहीं बनेगा तो हमारी स्थिति क्या होगी, उस पर हम डिटेल डिस्कशन करते थे। हम 70% मेडिकल डिवाइस इंपोर्ट करते हैं। हम उस वक्त जब एनालिसिस करते थे तब हमारे ध्यान में आया कि 53 प्रकार के API ऐसा है कि 90% से अबव
हमारी फॉर्मुलेशन इंडस्ट्रीज के लिए बल्क ड्रग हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, और ये इंपोर्ट ना हो या तो इंपोर्ट लाइन डिस्टर्ब हो तो 1000 एबव फॉर्मुलेशन इंडस्ट्रीज पर उसकी नेगेटिव इफेक्ट होनी थी। एक देश में मेडिसिन की रिक्वायरमेंट थी, फॉर्मुलेशन इंडस्ट्रीज थी, लेकिन बल्क ड्रग्स की क्राइसिस होने की संभावना थी क्योंकि सभी एंट्री पॉइंट यानी कि एयरपोर्ट, सी पोर्ट सभी बंद थे। जिस कंट्री से आता था वो कंट्री ऐसी स्थिति में हमें टाइम पे देगी नहीं देगी तो क्या, उसका अल्टरनेट मेडिसिन कौन सी होनी चाहिए ताकि हम वहां से एपीआई नहीं आया, इंडिया में ये मेडिसिन नहीं बनी तो ये ही टाइप की कौन सी मेडिसिन है डिसीज में हम उपयोग कर सकते हैं, उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन होता था। उसमें से विषय निकला कि हम मेक इन इंडिया आत्मनिर्भरता के तहत, व्हाट इज आत्मनिर्भर भारत? आत्मनिर्भर भारत यानी कि कोई चीज हम इंपोर्ट ही ना करें ऐसा नहीं। ग्लोबलाइजेशन के समय में हमें इंपोर्ट भी करना पड़ता है, एक्सपोर्ट भी करना होता है, लेकिन हमारी क्रिटिकल रिक्वायरमेंट पर हम किसी के ऊपर डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए। बल्क ड्रग और मेडिसिन हमारी क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है, वो देश में बननी ही चाहिए। डिफेंस इक्विपमेंट हमारी क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है, देश में बनना ही चाहिए। ये सब विचार से ये पीएलआई स्कीम का प्रारंभ हुआ था और उस वक्त आइडेंटिफाई किया सबसे पहली पीएलआई स्कीम ये श्रेणी में फार्मास्यूटिकल में आई थी, और उस वक्त डिसाइड करा था कि 48 प्रकार के एपीआई आइडेंटिफाई करा, और 48 प्रकार के एपीआई के साथ बल्क ड्रग के साथ बल्क ड्रग पार्क बनाने के लिए, मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने के लिए 14,000 करोड़ की पीएलआई स्कीम लॉन्च करी थी। उसके बाद नहीं हम केवल मैन्युफैक्चरिंग करें बट दुनिया की मार्केट को कैटर करना है तो हमें कॉम्पिटिटिव और बनना होगा, और कॉम्पिटिटिव बनने के लिए बल्क में प्रोडक्शन करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करके दुनिया की मार्केट में हमें डंप करना पड़ेगा और मार्केट हमारे कब्जे में लेना होगा। तब जाके हम इंटरनेशनल मार्केट में हमारी ब्रांड को छोड़ पाएंगे यानी कि हम स्ट्रांगली हमारा माल को बेचे। इसलिए पीएलआई 15,000 करोड़ का लाया और दोनों का बहुत सकारात्मक परिणाम हुआ। आज मुझे खुशी है हमने एक साथ में 51 प्लांट पीएलआई स्कीम से बने हुए हैं, 22 बल्क ड्रग के और 39 मेडिकल डिवाइस के। आज इतने प्लांट 51 प्लांट चालू हो चुके हैं, उसका इंटरवेंशन भी मार्केट में देखने मिलता है। दोस्तों मुझे बताते हुए खुशी है कि 70 ये जो देश में नहीं बनता तो 75,000 करोड़ रुपीस का जो हम इंपोर्ट करते थे वो आज इंपोर्ट तो बंद हुआ, हम 75,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर पाए हैं। दोस्तों ये हमारी सफलता है और ये देश बहुत सामर्थ्यवान देश है। दोस्तों हम कर सकते हैं। ये देश में ब्रेन पावर और मैन पावर की कभी कमी नहीं थी, ये देश में विल पावर की कमी थी जो मोदी जी ने आके पूर्तता की। ये सामर्थ्यवान देश है, कर सकता है। दोस्तों उस वक्त मोदी जी ने मुझे कहा था कि देश में कंटेनर की क्राइसिस है, और उस वक्त मेरे पास पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री भी थी। तो क्या देश में 95%, नॉट ओनली फॉर अवर कंट्री बट एंटायर वर्ल्ड, 95% कंटेनर एक ही कंट्री बनाती थी और यहां क्राइसिस होती थी, देश में कंटेनर थे नहीं। तो एक बार प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा कि यू बिलोंग फ्रॉम गुजरात एट भावनगर, भावनगर में दुनिया का सबसे बड़ा शिप रिसाइकलिंग यार्ड है और वहां फर्नेस इंडस्ट्रीज है। तो उन्होंने कहा कि क्या वहां के एंटरप्रेन्योर्स कंटेनर नहीं बना सकते हैं? तो मैं एक कोविड के दरमियान मेरी विजिट भावनगर हुई तो मैंने फर्नेस इंडस्ट्रीज वालों को बुलाया। मैंने कहा कि क्या आप कंटेनर नहीं बना सकते देश में? हमारे प्रति वर्ष 3-3.5 लाख कंटेनर की रिक्वायरमेंट है और हमें इंपोर्ट पर डिपेंड करना पड़ता है। तो हमारे एंटरप्रेन्योर्स लगे और दोस्तों 6 महीने में कंटेनर बनाना उन्होंने चालू करा। सरकार प्रो इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इज प्रो
प्रो फार्मर्स बट इंडस्ट्रीज फ्रेंडली गवर्नमेंट। और उस वक्त भारत सरकार का 10,000 कोंकर का 10,000 कंटेनर खरीदने के लिए टेंडर निकला, ग्लोबल टेंडर। तो मैंने माननीय मंत्री श्री रेलवे को कॉल करा। मैंने कहा अभी ग्लोबल टेंडर निकालने की आवश्यकता नहीं है, ये देश में कंटेनर बनाने का मैन्युफैक्चरिंग चालू हो गया है। तो अफसर लोग मानते नहीं थे, तो मैंने मीटिंग बुलाई। हम दोनों मिनिस्टर बैठे और सभी ऑफिसर्स बैठे। उन्होंने कहा साहब ये सब लोग हर बार टेंडर डालते हैं लेकिन कोई देते नहीं है। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप एक काम करिए, एक रेलवे मिनिस्ट्री के, एक शिपिंग मिनिस्ट्री से 3 सीनियर ऑफिसर जाके ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की विजिट करो, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है तो आप उससे खरीदो। वो गया, आके हमको रिपोर्ट दिया कि उन्होंने तो 200 करोड़ रुपीस का, आपका कहने से केवल एक व्यक्ति, एक सरकार की विल देखो आप, सरकार के एक मंत्री जाके कहता है कि आप बनाइए, हम आपको घाटा का बिजनेस नहीं होने देंगे, मदद करेंगे। दोस्तों, भारत सरकार के एक मंत्री को कहने से उन्होंने भावनगर में कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग चालू करा। आज 200 पर डे कंटेनर बनाने की कैपेसिटी उसकी है और देश को सप्लाई कर रहा है। वैसा ही ये PLI स्कीम के तहत, अभी उनके लिए तो PLI आई ही नहीं है, हमने लाने के लिए कहा था, लेकिन फार्मास्यूटिकल्स में, API में आज हम क्रिटिकल API के लिए सेल्फ सस्टेन हो गए हैं। दोस्तों, ये देश में कुछ बना लेना, कर लेना, इकोसिस्टम क्रिएट करो, एंटरप्रेन्योर्स आगे बढ़ जाएगा। ये देश में, मैं सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था, तो पढ़ाई में सिलेबस में था कि पिंपरी में पेनिसिलिन बनाने का प्लांट है, तो हम उसको क्वेश्चंस आंसर में लिखते थे। पेनिसिलिन का प्लांट हमारा 60 के दशक में बना था। बाद में जब 90 के दशक में ग्लोबलाइजेशन हुआ और फ्री ट्रेड आया, दुनिया पेनिसिलिन इंडिया में डंप करने लगी। 1998 में ये देश में लास्ट पेनिसिलिन जी का प्लांट बंद हो गया। पेनिसिलिन आज हमारी कॉमन मेडिसिन की रिक्वायरमेंट में से एक है, और पेनिसिलिन आज हमारे देश में ना बनता हो तो फिर हमारे यहां दिक्कत हो जाए। दोस्तों, ये देश बनाता ही था, क्यों नहीं बना? समय के साथ सरकार ने जो एफर्ट करना चाहिए था वो नहीं हुआ। भूतकाल की सरकार ने एनालिसिस करा होता कि ये पेनिसिलिन देश में बनना चाहिए। हम इंपोर्ट जो बल्क में इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है, डंप हो रहा है, उसके सामने इंडिजिनियस हमारी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन देने की आवश्यकता है, देनी चाहिए। जो समय पर दिया गया होता तो ये क्रिटिकल API पर हमें दुनिया पर डिपेंडेंसी नहीं रखनी होती। ये पेनिसिलिन जी पर भी हमें दुनिया पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, बंद हो गया था। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है। अरुणेश जी मुझे कहते थे कि साहब ये महीने में तैयार हो जाएगा पेनिसिलिन का प्लांट, आप इनॉग्रेशन करेंगे? मैंने कहा मोदी 3 गवर्नमेंट में करूंगा। वो अगले महीने में चालू हो जाएंगे तो हम चुनाव में चले जाएंगे और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। लेकिन मई महीने, जून महीने में हम देश में फिर से 30 साल के बाद पेनिसिलिन जी का API का प्रोडक्शन चालू कर देंगे। दोस्तों, ये हमारी क्षमता है और इसलिए PLI स्कीम की इस सक्सेस स्टोरी है। आने वाले दिनों में और जो PLI का प्लांट है वो भी आ रहा है। हमारी सरकार की रीति नीति कार्य पद्धति रही है, हम कोई ऑफिस में बैठ के टेबल पर डिसीजन करने वाले लोग नहीं हैं। कोई भी निर्णय करना है तो अल्टीमेटली हम किसके लिए कर रहे हैं? देश की रिक्वायरमेंट के लिए। जो हम कोई प्रोजेक्ट और प्लानिंग करते हैं तो इंप्लीमेंट कौन करेगा? इंडस्ट्रीज करेगी। जब जिसको प्लांट चलाना है उसके साथ हम कंसल्टेशन नहीं करेंगे तो आउटपुट नहीं मिलेगा। इसलिए हमारी पॉलिसी लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है, पॉलिसी ट्रांसपेरेंट होती है, सरकार हमेशा अप्रोचेबल होती है,
आप में से फिक्की की टीम कई बार मैंने सामने से कहा, वो मुझे मित्तल मिलने आए थे तो मैंने कहा कि मैं आपके यहाँ आके सारी PLI को लॉन्च करना चाहता हूँ। PLI स्कीम से बना हुआ प्लांट को डेडिकेशन टू नेशन करना चाहता हूँ, क्योंकि इंडस्ट्रीज बॉडी है। मैंने ये भी कहा था अरुणेश जी को कि नहीं केवल ये प्लांट वाले ही हमारे साथ जुड़े, लेकिन यूट्यूब के द्वारा हमें सभी इंडस्ट्रीज को जोड़नी चाहिए, ताकि और उसके सामने प्रेजेंटेशन भी रखना चाहिए हमारी PLI स्कीम कितनी सक्सेस रही, इंडस्ट्रीज के लिए है, देश के लिए है। और दोस्तों, इंडस्ट्रीज और सरकार परस्पर सहयोग से चलती है। हम हमारा गोल को क्यों अचीव कर रहे हैं? मोदी गवर्नमेंट अपना हर गोल, हर टारगेट, मोदी की सारी गारंटी टाइम पे क्यों पूरी हो रही है? सारी दुनिया लॉकडाउन के बाद सफर कर रही थी, इकोनॉमी टेबल हो गई थी, टेबल तो नहीं कहे माइनस हो गई थी, कंट्री खड़े नहीं हो पा रहे थे। वैसी स्थिति में हम 6-7% ग्रोथ से आगे बढ़ने लगे। दोस्तों, तब हो पा रहा है हम समस्या को समझने के लिए प्रयास करते हैं। समस्या कहां है, इश्यू कहां है, उसको एड्रेस करने के लिए कंसल्टेशन करते हैं। डिबेट और डिस्कशन ये हमारी सरकार की कार्यशैली है, और इसलिए सब लोग साथ में मिलके, मोदी जी ने बहुत सही बात कही है कि हमें 2047 में देश की आजादी का हम जब शताब्दी दिवस मनाता हो, तब 25 साल में देश को डेवलप्ड कंट्री बनाना है। लेकिन डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए मोदी जी ने कहा कि हम कदम से कदम मिला के आगे बढ़े, एक साथ में चल के आगे बढ़े, हम हमारा कर्तव्य का निर्वहन करें। सभी का कर्तव्य है। एज ए मिनिस्टर हमारा भी कर्तव्य है देश के प्रति। आप इंडस्ट्रीज है तो इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में आपका भी नेशन के प्रति कर्तव्य है। ऑफिसर यहां बैठे हुए हैं, उसका भी नेशन के प्रति अपना भी दायित्व है। सब लोग अपना अपना कर्तव्य को निर्वहन करें और साथ में चले, संकल्पता की ओर आगे बढ़ने के लिए। मोदी जी ने जब रेड फोर्ट से अमृत वर्ष के अवसर पर ध्वजवंदन किया, उस वक्त कहा कि हम एक साथ में मिलकर आगे बढ़ेंगे, यानी कि देश के एक व्यक्ति प्रयास करेंगे तो एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, आप अकेले चलेंगे तो एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन देश की 140 करोड़ की जनसंख्या एक संकल्प के साथ आगे बढ़ेगी तो देश 140 स्टेप 140 स्टेप एक साथ में आगे बढ़ जाएगा। ये भावना के साथ, ये परिकल्पना के साथ मोदी गवर्नमेंट काम कर रही है। मैं आप सबको शुभेच्छा देना चाहता हूँ। आज जिस प्लांट का डेडिकेशन हुआ है उसको भी अभिनंदन देता हूँ। जिन्होंने PLI स्कीम को देखी, समझी और भविष्य में उससे प्रेरणा लेके वो भी आगे बढ़ेंगे, उसको भी मैं अभिनंदन देता हूँ। हम सब लोग साथ में मिलके ये देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को विकसित बनाने के लिए प्रयास करें, काम करें। दोस्तों, मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है। हमारे 3rd, 4th, 5th जनरेशन जब देश का इतिहास पढ़ेगी, आज भी हम इतिहास पढ़ते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का स्वर्ण काल। जब राजनीतिक इतिहास हमारी न्यू जनरेशन पढ़ेगी, तब दोस्तों इतिहास के पृष्ठ पर लिखा होगा नरेंद्र मोदी का स्वर्ण काल। इन नरेंद्र मोदी का स्वर्ण काल के इतिहास के पन्ने की साक्षी बनने के लिए हम सब लोग साथ में मिलकर प्रयास करें। धन्यवाद। समर्थ भारत, सशक्त भारत, स्वावलंबन की पूरे विश्व में मिसाल बनने वाले भारत पर हर भारतीय को गर्व है। हम माननीय मंत्रीवर्ग के बहुत बहुत आभारी हैं उनके इन प्रेरणादायी शब्दों के लिए। Ladies and gentlemen, as we are proceeding towards the end of the program, it's an important announcement that we would like to share with you all.
We would request our friends from the industry to kindly proceed outside for high tea immediately after the vote of thanks. We will request only the media representatives to kindly stay back for an exclusive interaction with the Honorable Minister and the Honorable dignitaries seated on the dais. Meanwhile, it gives me great pleasure to request our Secretary General, Mr. S.K. Pathak, to kindly propose the vote of thanks. Please put your hands together and give a warm welcome. बहुत धन्यवाद और on behalf of FICCI, I just wanted to repeat something that Honorable Minister said. अगर माननीय मंत्री जी चाहते, so this inaugural could have been from his office, from a meeting room in his office. लेकिन he very rightly said कि ये सरकार परस्पर सहयोग से चलती है. Industries are partners to the growth of our country. अगर आत्मनिर्भर भारत बनेगा तो अकेले माननीय मंत्री जी सचिव महोदय नहीं करेंगे, हम सबको साथ लेके चलेंगे. And that is why we are deeply grateful to our chief guest, Honorable Shri Mansukh Mandaviya ji, Honorable Minister of Chemicals, Fertilizers, Health and Family Welfare. A round of applause for Honorable Minister. जैसा आपने सुना, it is such an inspirational story that from 0 containers made in India to 200 containers made per day only because he went and motivated our industry members in Bhavnagar. And I'm so happy because हमारे President of FICCI, Dr. Anish Shah, हम आपसे मिलने गए थे सर अभी 3 दिन पहले. Dr. Anish Shah's roots are also in Bhavnagar, so we are especially happy. Our sincere appreciation to Shri Rajesh Kumar Singh, Secretary DPIIT. He made a very telling point on the PLI scheme, the productivity linked scheme. And I can say from FICCI's industry members' perspective, shuru mein there were initial skeptics, but I think conclusively the success of the PLI scheme has been proven, and today so many at one go in the PLI scheme have been launched. Of course, the pharmaceutical industry, as Secretary Arunish Chandali said, India is known as the pharmacy of the world. Sir, जब हम लोग कोई foreign delegation लेके FICCI के जाते हैं, so the standard demand from all industry members across the world is कि हम आपका pharma industry से सीखना चाहते हैं. And that is the credit to the government and our pharma members working together. The kind of import substitution and export promotion, especially in bulk drugs and in medical devices, is speaking for itself. एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ, because we have not only people in this room, dignitaries in the audience, but all over the country I can see people listening to us. The story refers to medical devices for newborn babies, infants. So in the first 48 hours, first 2-3 days, you have specific medical devices to see whether the baby is healthy or not. And this, one of our FICCI leaders, naam nahi lunga, one of our FICCI leaders went and set up in a country which is to the north of India. Wo bhi naam nahi lunga. When he set it up in 2016, the number of births in that country was 1.6 crore births. 1.6 crore, 16 million births. So he made a business plan saying, 2% growth, so much business, so much cash flow. From 16 million births, that country's births have come down to 9 million. In less than 7 years. 1.6 crore se kam hoke 90 lakh. I will not name the country, but this is not going to happen in India. Our members are very happy. We will have good profits and cash flow. And with the support of Honorable Minister and the Government of India, Viksit Bharat will be a reality by 2047. Thank you so much, everybody. Thank you. Thank you, sir. May I once again request our friends from the industry to kindly proceed outside for the high tea. I request media representatives to please come and set up their cameras here in front.
we will have an exclusive interaction with the Honorable Minister. I request our friends from the media, यदि आप चाहें तो आप अपने कैमरास लेकर आगे आ सकते हैं. Ladies and gentlemen, once again I take this opportunity of thanking you all on behalf of Department of Pharmaceuticals, Government of India and FICCI for having joined us here today for the inaugural program of Greenfield projects under PLI scheme for bulk drug and medical devices. एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार. Have a great evening ahead. Please do join us for a high tea which is being served outside. Thank you.